অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আজিৰ এই দিনটোত বাংলাদেশৰ হিন্দু নাগৰিকসকলৰ বাবে এটোপাল চকুলো পেলাব লাগে আৰু এই দিনটোতো হিন্দুসকলৰ দুৰ্দশাৰ সময়তো এষাৰো মৰমৰ মাত নিদি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দৰে বামপন্থী লোকসকল সঁচাকৈয়ে যে হিন্দু লোকসকলৰ বিৰোধী তাক আকৌ এবাৰ উদঙাই দিছে। গতিকে হিন্দু বিৰোধী এই ব্যক্তিগৰাকীক হিন্দু লোকে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব তাক সমাজে বিচাৰ বিবেচনা কৰি চোৱা উচিত। মই গম নাপাওঁ এইবিলাক কি কথা কৈ থাকে। এইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই। এইকেইটা দিন ১.৫ বছৰ আছে, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব দিয়ক। পঢ়িছে, ইয়াৰ প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল যে ৭৫% ল'ৰা হ'লে নম্বৰ পাব লাগিব আৰু ৬০% হ'লে ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব লাগিব আৰু কোনোবা এখন কলেজত নাম লগাব লাগিব, অসমৰ কলেজত। এতিয়া কোনোবাই যদি অসমৰ কলেজত নাম নলগায়, তেওঁ টিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ৰাজস্থানলৈকে যায়, আঁচনিখনেতো তেওঁক ঢুকি নাপাব। গতিকে এইটো আঁচনিখনৰ নিয়মটোৱে হ'ল যে অসমৰ কলেজত পঢ়িব লাগিব। এতিয়া যদি কোনোবাই অসমৰ কলেজত নপঢ়ে আৰু তেওঁ কোটাত গৈ ট্ৰেইনিং কৰে, তেওঁক আমি কেনেকৈ মাতি আনি পেলাই দিব পাৰোঁ? তেনেকুৱা ব্যৱস্থাটো আঁচনিখনত নাই। কিন্তু যদি কোনোবাই বাদ পৰি গৈছে, আমাক সামান্য যে মই এইখন কলেজত পঢ়ি আছোঁ, মোৰ নম্বৰ এইটো, ফেচবুকত আপলোড কৰি দিলেই পাই যাব। সেইটোলৈ বাদ পৰি যোৱাটো কথাই নাই। গতিকে কিন্তু মই যিকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা শুনি আছোঁ, তেওঁলোকৰ হ'ল কলেজত পঢ়া নাই, কোচিঙত নাম লৈছে। এতিয়া তেওঁলোকক আঁচনিখনৰ যিটো নিয়মাৱলী সি ঢুকিয়ে নাপায়, আগৰ পৰাই নাপায়, এই বছৰ বুলি নহয়, আগতেও নাপায়। बेटी +2 पास किया है फर्स्ट डिवीजन का साथ, उनको स्कूटी मिलेगा। जो क्लास 9 में बच्ची पढ़ रहा है उनको साइकिल मिलेगा। जो बाढ़ में जो लोगों का मकान वगैरह क्षतिग्रस्त हुए थे उनको वित्तीय सहायता मिलेगी। और जो हमारे बच्चे मैट्रिक क्लास 10 का एग्ज़ाम अच्छा से पास किए थे, उनको भी हम लोग एक कैश इंसेंटिव 12,500 रुपया देने का काम करूँगा। साथ में जो असम का माताओं ने वित्तीय प्रतिष्ठानों से लोन लिए थे 50,000 तक, उनका लोन, उनका ऋण माफ़ करने का हमने चुनाव का समय वादा किए थे। इस अगले 12 दिनों में हम 50,000 रुपया तक जो माताओं ने लोन लिए थे उनको हम बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या ड्यूज क्लियरेंस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। इसलिए उनका जो उन्होंने लोन लिए थे वो अमाउंट हम बैंक को वहाँ पास कर चुके हैं। तो पूरा अगली 12 दिन में 11 से 12 लाख परिवार असम सरकार की ये विकास का कार्यक्रम से ये लोग उपकृत हो गए। सर, आज ने आप बोला कि देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जितना इतना यहाँ पे डेवलप। देखिए, स्टूडेंट के लिए मैंने बहुत स्टेट चुनाव का समय दौरा किया और मैंने सब लोगों को पूछता हूँ कि आपका सरकार में क्या क्या स्कीम है। स्टूडेंट के लिए हमें जो इकोसिस्टम तैयार किया हूँ, कॉलेज में आपको एडमिशन फीस नहीं देना है। कोई अगर बच्ची कॉलेज पढ़ता है तो उनको हम हर महीना गरीब अमीर कोई विचार नहीं करते हुए 2,500 रुपया तक प्रति महीना जो देने का हमारा स्कीम है। एग्ज़ाम का फीस भी नहीं लेने का जो स्कीम है। ये सारे जो इकोसिस्टम हमने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया हूँ। मैंने मेरा अपना चुनाव दौरा में कहीं स्टेट में ऐसा स्कीम मैंने नहीं देखा। असम ऐसा एक अनोखी प्रदेश है
जो प्रदेश निरंतर विद्यार्थियों का कल्याण के लिए काम कर रहा है কৰিম বেছি স্পীডত যাব খোজা নাই হয় আৰু তেওঁলোকে বেছিকৈ কৈ আছে কাৰণে মই অলপ শ্ল' কৰি দিছোঁ কাৰণ ইমান স্পীডত গ'লে ৰেল এক্সিডেণ্ট হৈ যাব এখনতো আমিওতো কেইজনমানে মানুহ অসমো সৰু এখন ৰাজ্য 5 বছৰত চবেই চব হোৱাটো বিচাৰে সেইকাৰণে মই পশুপালন মন্ত্ৰীক কৈছোঁ যে অলপ শ্ল'লি যাওক বেছি স্পীডত যাব নালাগে কাৰণ স্পীডত গ'লে এক্সিডেণ্ট হৈ যাব চাৰিওফালে সেই আইনখনত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত ডাঙৰ কাজিয়াৰে উদ্ভৱ হৈছিল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অলপ শ্ল'কৈ যাওক সাৱধানে যাওক যাতে ৰেলগাড়ীখন ক'তো এক্সিডেণ্ট নহয়